This is breadboard and it's a genius way to build your projects without using soldering iron. By the way, hey hello guys, welcome to our channel. Consider to be subscribed for more such robotics. This is beginners friendly tutorials to learn robotics. तो आज हम breadboard के बारे में सीखेंगे और खुद का एक सर्किट भी डिजाइन करेंगे. So let's unbox it first. So this is a breadboard which look like honeycomb. It has multiple holes to connect our components like this LED or a sensor. Breadboard के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं A and B which are horizontally connected. And these are called power lines जहाँ पर हम multiple components को power up कर सकते हैं. And these lines are vertically parallelly connected. It means जब मैं इसको starting में करंट दूंगा तो end तक flow होगा. And इसका यूज हम multiple components को power up करने के लिए यूज करते हैं. Now let's begin to build our first project. We just need a LED, battery and a resistor and a breadboard obviously. तो सबसे पहले LED को breadboard से connect करेंगे and this ABCD points are parallel. It means अगर मैं A में power दूंगा तो वो D तक जाएगा. Hence LED तक power पहुंच जाएगी. Then same negative side पे हम एक resistor का यूज करेंगे between बैटरी एंड LED एंड बैटरी का नेगेटिव साइड रेजिस्टर से कनेक्ट करते ही वाला यू मेक योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. यूजिंग अ ब्रेडबोर्ड टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट इज द स्मार्टेस्ट वे. लेट्स ट्राई विद दिस green LED. This is for beginners but we can build our complex circuits using this guy. This is how you can use your breadboard with these components. If you like this video then smash the like button and comment below what would you like to see next. See you in next one.